नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्ञान रंजन स्वागत करछि आपनको फाइट फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल को। जो माने पर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करना तले थिया घंटी आइकन को दबाई सब्सक्राइब करनियंतु तापर हमर जा रिसेंट अपडेट आसी आपण माने पाई परिबे। हां दर्शक बंधु ओटीटी एग्जाम मुंडा ऊपर आ किछि दिन पर ओटीटी एग्जाम हेबो तेणु आपण माने आपनको प्रिपरेशन जारी रखिथिबे। आमे आपनको जतकिंच सहायता करिया पाई एही प्रयास माध्यम रे आपनको चेष्टा करूछु। हां दर्शक बंधु हाउ टू क्रैक ओटीटी इन 10 डेज 10 दिन केमिति पढ़ी कि आमे ओटीटी क्लियर करिया से विषय रे आमे आपनको पई गोटे स्पेशल फाउंडेशन कोर्स नै आछछु। वीडियोटी प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। मु आपनको गोटे क्वेश्चन देबी आपण ता देखि पारथबे। लैक्टोमीटर्स यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क आर बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल? बर्नौलीज प्रिंसिपल, केल्विन्स प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स प्रिंसिपल। या भीतर सठिक उत्तर आपण माने निश्चय हमको कमेंट बॉक्स रे लिखि पठाइबे। सो आ डेरी न करी चलतु देखा आज कौन रही एपिसोड जो थे आपण को बहुत किसी साहाय्य मिलिबो। डेरी न करी चलतु आरंभ करवा आज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपन रही डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये मुझे एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन करी किसी क्वेश्चन सीरीज करी निश्चय आपण मैंने ये क्वेश्चन सीरीज भितर आपंकर एग्जाम रे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पाइबे। फर्स्ट क्वेश्चन डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस द आइडिया इज एसोसिएटेड विथ। डेवलपमेंट केतले शेष हुए ना ये आइडिया किए देथिले ये आइडिया क्या सहित एसोसिएटेड अच्छी? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। सो सठिक आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। दैट मीन्स डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। एटा होची कंटिन्यूट रहे। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रेन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। पिलांकर जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से गुड़ाकर डिफरेंट स्टेजेस से गुड़ाक किए देथिले सेटा को साइकोलॉजिस्ट देथिले? एरिक्सन, स्किनर, पियाजे, कोलबर्ग। सठिक उत्तर आपणकर होची पियाजे। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपण माने बहुत मात्रा जानिथिबे। सो सठिक आंसर इज आपणकर सी पियाजे। जीवा क्वेश्चन नंबर 3 पेरेंट्स शुड प्ले डैश रोल in learning process of young children. Parents should play a dash role in the learning process of young children. young children का जो learning process रे parents को ही role play करिया दरकार। A proactive, B sympathetic, C neutral, D negative. So correct answer is आपनकर proactive. Option number A is the correct answer. That is parents should play a proactive role in the learning process of young children. जी परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 4 द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय किए प्रमोट करथिले? ऑप्शन ए पावलोव, बी जीन पियाजे, सी वाइगोस्की, डी गेसाल थ्योरीज। सो सठिक आंसर इज आपनकर गेसाल थ्योरिस्ट। गेसाल थ्योरिस्ट आपनकर इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रमोट करथिले। जी परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 5 motivation is a process of learning. Motivation in the process of learning. Option A makes learner think unidirectional, B create interest of learning among young children, C sharpens the memory of learners, D differentiate new learning from new learning. So सठिक आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर बी creates interest for learning among young learners. एटा जे आपनकर मोटिवेशन एटा लर्निंग प्रोसेस रे हेल्प करता है। जे परवर्ती प्रश्न को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंट साइन ऑफ इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड रो कोटा साइन नहीं माने लक्षण नुहे। ऑप्शन ए one who carries linking an abstract manner, one who can adjust in a new environment, C one who has ability to cram long essays very quickly, one has ability to communicate fluently and appropriately. So सठिक आंसर is आपनकर one who has ability to cram long essays very quickly. cram माने से बहुत बड़ा long essay को घोषि दिए। एटा होची young children रो माने intellectual children रो सेटा लक्षण नुहे। जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज द प्लेस वेयर चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन बेस्ट वे? ऑप्शन ए ऑडिटोरियम, बी होम, सी प्लेग्राउंड, डी स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट।
सो सठिक आंसर इज आपणकर स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट इज द बेस्ट प्लेस वेयर cognitive development of the child is defined in best way. Go to next question. The stage in which child begins to think logically about objects and events is known as option A pre-operational stage, B concrete operational stage 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ, sensory motor stage birth 0 to 2 years, formal operational stage 11 and अधिक. So सठिक आंसर इज आपणकर concrete operational stage. Age is 7 to 11 years. In this age, the child begins to think logically about the events and objects. Go to next question. Question number 9. Which of the following is not related to psychosocial need of the child? कोटा psychosocial need of the child सहित related नुहे. Option A regular elimination of waste products from the body, B need for company, C need appreciation of social approval, D need for emotional security. So सठिक आंसर इज आपणकर रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी एमंग लर्नर्स? कोटा लर्नर्स मानक मध्य क्रिएटिविटी सृष्टि करियो. ऑप्शन ए एम्फासाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, C teaching the students the practical value of good education, D providing opportunity to question to nurture the innate talents of every learner. So सठिक आंसर इज आपणकर providing opportunity माने opportunity दबा to questions to nurture the innate talents of every learner. Go to next question. Question number 11. Mind mapping refers to mind mapping अर्थ कौन? Option A drawing the picture of a mind, B researching the function of a mind, C technique to enhance comprehension, D plan for an adventure. So सठिक आंसर इज आपणकर researching the function of the mind. Option B is the correct answer. mind mapping कहले माइंड रा फंक्शन को रिसर्च करिवा. Go to next question. Question number 12. A young child responds to a new situation. गोटे young child new situation को respond करे on the basis of response made by him or her in similar situation. Situation अनुसार से response दे as in the past जहाँ हेतिला. This is related to यह कहाँ सहित संबंधित? Option A law of attitude of learning process, B law of readiness of learning, C law of analogy of learning, D law of effect of learning. So सठिक answer is law of analogy of learning. Option number C is the correct answer. Go to next question. Question number 13. The best way, especially at primary level, to address the learning difficulty students to use. Option A easy and interesting textbook, B storytelling method, C variety of teaching methods suited to disability, D expensive and glossy support material. So सठिक answer is आपणकर a variety of teaching methods suited to the disability. Go to the next question. Question number 14. Education of children with special needs should be provided. जो मानकर special needs अच्छी education पाए से मानको केमती provide करा जाएगा था. A in special school, B by special teacher in special school, C along with normal children, D method developed for special children in special school. So सठिक answer is along with normal children. That's why it is called as now inclusive education. So correct answer is option number C. Go to next question. Dyslexia. Dyslexia is associated with option A reading disorder, B behavioral disorder, C mental disorder, D mathematical disorder. Mathematical disorder is known as dyscalculia. So सठिक आंसर इज आपणकर सो ये मिस्टेक हो जाए. सो डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ आपणकर ऑप्शन नंबर ए दैट इज रीडिंग डिजॉर्डर. ए रीडिंग डिजॉर्डर को कहबा आपणकर डायलेक्सिया, राइटिंग डिजॉर्डर को कहबा डिफ्लेक्सिया, आ आपण मैथमेटिकल डिजॉर्डर को कहबा डिस्काल्कुलिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज नॉट ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड कोटा बीइंग गिफ्टेड गोटे साइन नुह ऑप्शन ए नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन बी क्यूरियोसिटी सी क्रिएटिव आइडियाज डी फाइटिंग विथ अदर्स सो सठिक आंसर इज फाइटिंग विथ others option number D is the correct answer. Go to next question. A student of class V grade with visual deficiency माने देखि पारन ठीक से should be केमती ट्रीट करिया कथा option A treated normally in the classroom and provided support through audio CD B given special treatment in the classroom C active to a lower level of work D helped with his or her work by the parents and friends. So सठिक आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर ए treated normally in the classroom and provided support through audio CDs. Option number A is the correct answer. Go to next question. Which of the following question number 18 which of the following statements cannot be considered as feature of the process of learning? Option A learning is goal oriented B learning is also a learning process C educational institutions are the only place where learning takes place D learning is a comprehensive process. So satik answer is option number C educational institutions are the only place where learning takes place. Go to next question. Question number 19 learning can be enriched if learning ta kemiti enrich kara jai paribo. Option A teachers use different types of lectures and explanation B due to attention is paid to a periodic test in the class C situation from the real world are brought into the class in which students interact with each other and teacher facilities D more and more teaching aids are used in the class. So ठीक answer is आपनकर option number C situation from the रियल वर्ल्ड आर बट इन द क्लास जो रियल वर्ल्ड जहाँ देखा जाता क्लास को आने को पड़ो जो थी स्टूडेंट माने इंटरैक्ट करि परिबे. गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड केयरफुल अबाउट कोन सब ध्यान देवा दरकार ए यूजिंग ए वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक बाउंड्रीज बी using technical language to give feedback C making comparison between different students D labeling students as intelligent or average learners. So satik answer is आपनकर option number A using a variety of ways to collecting information about students learning across the scholastic and co-scholastic boundaries. Go to next question question number 21 a teacher because of his democratic in nature allow students to sit all over the class सदाबले कह चाहे प्ले मैंने क्लास रह some sit together and discuss and do group in reading some sit quietly and read themselves a parent doesn't like it which of the following way may be the best way to handle the situation कोटा या भितर best way हवा situation को handle करबा पई. Option A parents should show trust in the teacher and discuss problem with the teacher B parents should take away the child from the school C parents should complain against the teacher to the principal D parents should request the principal to change the section of their word. So satik answer आपण मानकर होची इटा option number A parents should show trust in the teacher and discuss the problem with the teacher. Go to next question question number 22 which of the following should be considered the most important quality of a teacher at primary level. Option A competence in the method of teaching and knowledge of subject B competence to teach in highly standardized language C eagerness to teach D patience and perseverance. So ठीक आंसर आपनकर होची option number D patience and perseverance is the most important quality of a teacher at primary level. Go to next question dash is considered as a sign of motivated teaching. Option A questioning by students B pin drop silence in the class C maximum attendance in the class D remedial work given by the teacher. So सठिक आंसर आपनकर होची questioning by students. Go to next question at lower classes playway method of teaching is based on
क्या बेस ऑप्शन ए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बी सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, सी थियोरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, डी प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। सो सठिक आंसर आपनकर होची साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। The term curriculum in the field of education refers to कहा को बुझाए। ऑप्शन ए इवैल्यूएशन प्रोसेस, बी टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, सी मेथड ऑफ टीचिंग at the end of the content to be taught, the overall program of the school which students experience on a day to day basis। so सठिक आंसर आपनकर होची ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल which students experience on a day to day basis। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जा परवर्ती प्रश्न को अकॉर्डिंग टू Piaget which of the following stages does a child begin to think logically about abstract position। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज, बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो सठिक आंसर आपनकर होची फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष रु अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 27 ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड the potentiality of his or her student which of the following field is related to this objective। ऑप्शन ए मीडिया साइकोलॉजी, बी एजुकेशनल साइकोलॉजी, सी एजुकेशनल सोशियोलॉजी, डी सोशल साइकोलॉजी। सो सठिक आंसर है आपनकर एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 28 कार्तिका who doesn't talk much at home but talks a lot at school, it shows that option A she doesn't like her home well, B her school not get acknowledged at school, the school provide opportunity to the children to talk a lot, the teacher demand that children should talk a lot at school। so सठिक आंसर आपनकर होची her school not get acknowledged। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 29 चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। ऑप्शन ए कोलबर्ग, बी स्किनर, सी पियाजे, डी पावलोव। तो सठिक आंसर आपनकर होची पियाजे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ थोड़े क्वेश्चन देखी दियंतु। Children actively construct their understanding of world is a statement attributed to Piaget। Question number 30 which of the following stages do children become active members of their peer group? which of the following stages do children become active member of their peer group? option A early childhood, B childhood, C adolescence, D adulthood। so सठिक आंसर आपनकर होची adolescence। जा परवर्ती प्रश्न को देखिया पुणी इथिला 30टा प्रश्न पुणी आ 30टा प्रश्न आपण मानक पई ए सेक्शन रे रखिछि। टोटल 60टी प्रश्न दुईटी पार्ट रे आपण मानक पई रखिछि। चेष्टा करंतु आपण केतेटी क्वेश्चन आंसर देवा पई यथा संभव आपण केते मार्क निश्चय हमको कमेंट बॉक्स रे लिखि पठांतु आ सजेशन निश्चय आपण माने देवा पई चेष्टा करंतु। या परवर्ती प्रश्न को ए क्रिएटिव लर्नर रिफर्स टू वन। क्रिएटिव लर्नर काहू कहबा? ऑप्शन ए वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, बी हाईली इंटेलिजेंट, सी कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कॉन्स्टेंटली good marks in test, D good at lateral thinking and problem solving। so सठिक आंसर आपनकर good at lateral thinking and problem solving। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 2 इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन कोथरे डिफर करती? ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
B. Rate of development. C. Sequence of development. D. General capacity of development. So सटीक आंसर is rate of development. जी परवर्ती प्रश्न को every learner is unique means every learner is unique means that तार अर्थ कौन? ऑप्शन ए no two learners are alike in their attributes, interests and talents. B. Learners do not have any common qualities, not they share common goals. C. Common curriculum for all learners is not possible. D. It is impossible to develop the potential of learners in heterogeneous class. So सटीक आंसर आपनकर no two learners are alike in the abilities, interest and talents. Option A is the correct answer. जी परवर्ती प्रश्न को constructivism as a theory. Constructivism as a theory. Option A focuses on role of imitation. B emphasizes the role of learners in constructing his own view of the world. Option B. C emphasizes on memorizing information and testing through recall. D emphasizes on dominant role of the teacher. So सटीक आंसर आपनकर B, that is emphasize the role of learners in constructing his own view of the world. जी परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 5. Development of concept is primarily a part of option A emotional development, B intellectual development, C physical development, D social development. सब सटीक आंसर आपनकर होची intellectual development. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. जी परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 6. हेरिडिटी इज कंसीडर्ड आज डैश सोशल स्ट्रक्चर. ऑप्शन ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी डायनामिक, डी स्टैटिक. सो सटीक आंसर आपनकर होची स्टैटिक. हेरिडिटरी होची स्टैटिक स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 7. द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस. ऑप्शन ए throughout the life of a person, B during adolescence, C during early childhood, during adulthood. So सटीक आंसर आपनकर होची during adolescence. 7B. Option number B is the correct answer. The most intense and crucial socialization takes place. जी परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 8. Helping learners recapitulate or recall that what they have already learned is important. Helping learners recapitulate or recall what they have already learned is important because option A it is convenient beginning for any classroom instruction. B relating new information to prior knowledge enhances learning. C it is an effective way of revising old lesson. D it enhances the memory of learners thereby strengthening learning. So सटीक आंसर आपनकर होची B relating new information to prior knowledge enhance learning. जी परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 9. According to Piaget, during the first stage of development, birth to 2 years of age, a child learns best. Option A by using senses, B by comprehending neutral words, C thinking in abstract fashion, D by applying acquired knowledge of language. सटीक आंसर आपनकर होची by using senses. Question number 10. Theory of learning which totally and only depends on observable behavior is associated with dash theory of learning. Option A cognitivist, B developmental, C behaviorist, D constructivist. So सटीक आंसर आपनकर होची behaviorist. Option number C is the correct answer. जी परवर्ती प्रश्न को multilingual character of Indian society should be seen as. Option A hindrance in teaching learning process, B a resource for enrichment of school life, C a challenge to teachers' capacity to motivate students to learn, D a factor that makes school life complex experience for the learners. So सटीक आंसर आपनकर होची a resource for enrichment of school life. Option B is the correct answer.
जा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 12 क्रिएटिव आंसर रिक्वायर क्रिएटिव आंसर कौन दरकार करे ऑप्शन ए डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन बी कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन सी ओपन एंडेड क्वेश्चन डी ए हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम तो सठिक आंसर आपणकर होची ओपन एंडेड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 13 diagnosis of the gaps in the learning students should be followed by option A appropriate remedial measures B intensive drill and practice C systematic revision of all lesson D reporting the finding to learners and parents so सठिक आंसर आपणकर होची appropriate remedial measures option number A is the correct answer। जा परवर्ती प्रश्न को which of the following statements cannot be considered as a feature of learning option A learning is a process that mediates behavior B learning something that occurs as a result of certain experience C study of behavior is learning unlearning is a part of learning so सठिक आंसर आपणकर होची study is the behavior of learning। स्टडी बिहेवियर इज लर्निंग एटा होची आपनकर एटा होची ये कौन फीचर लर्निंग रा फीचर नुह। जा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 15 सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रिफर टू ऑप्शन ए देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग बी क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट्स बिहेवियर सी रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय स्टूडेंट्स बॉडी डी सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल सो सठिक आंसर आपनकर होची ऑप्शन नंबर ए द एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। या परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन ए आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन ए फेनोमेना और ए कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स बी टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलुस्ट्रेट हाउ ए लॉ वर्क्स सी हेल्प स्टूडेंट्स टू सी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालॉजीज D enable students to memorize isolated facts and procedure so सठिक आंसर आपनकर enable students to memorize isolated facts and procedure option D is the correct answer। जो परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 17 which of the following statements is true about learning option A errors made by children indicate that no learning has taken place B learning is effective in an environment that is emotionally positive and satisfying for learners C learning is not affected by emotional factors at any stage of learning D learning is fundamentally a mental activity so सठिक आंसर आपनकर होची ऑप्शन बी learning is effective in an environment that is emotionally positive and satisfying for the learners ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। जी परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 18 human development is based on the principle which of the following is not a principle of human development option A continuity B sequentially C general to specific D reversible so सठिक आंसर आपनकर होची reversible ऑप्शन नंबर D is the correct answer। जे परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 19 the main purpose of assessment should be assessment मेन पर्पस कौन है आवश्यक ऑप्शन ए टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ लर्नर्स बी टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स सी टू डिसाइड इफ ए स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास डी टू डायग्नोज एंड रिमेडी गैप्स इन द लर्निंग सो सठिक आंसर आपनकर होची टू डायग्नोज एंड रिमेडी गैप्स इन द लर्निंग। या परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 20 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम integrated education for disabled children aims at providing educational opportunity with children with disability in option A regular school B special school C open schools D blind relief associated schools so सठिक आंसर होची आपनकर रेगुलर स्कूल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो परवर्ती प्रश्न को which of the following is not a sign of reading difficulty among young learner difficulty in option A letter and work recognition B reading and speed fluency understanding words and ideas
स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। सो सठिक आंसर आपणकर होची अंडरस्टैंडिंग वर्ड एंड आइडियाज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 22। A teacher wants the gifted children of her class to achieve their potential. Which of the following should she not to achieve her objective? Option A, teach them to enjoy non-academic activities. B, teach them to manage stress. C, segregate them from their peers and special attention. D, challenge them to enhance their creativity. So सठिक आंसर आपणकर होची segregate them for their peers for special attention। जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following is not a characteristic feature of intrinsically motivated children? Option A, they are always succeed. They enjoy doing their work. C, they display high level of energy while working. D, they like challenging tasks। So सठिक आंसर आपणकर they always succeed। Which of the following is not appropriate format tool for formative assessment? Option A, assignment. B, oral question. C, term test. D, quiz and game। so सठिक आंसर आपणकर होची term test। जा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 25। learner should be encouraged। Option A, ask many questions as possible both inside and outside the class. Actively interact with the other learners in the group. C, participate in many as co-curricular activities as possible. D, memorize all the answer to the question while the teacher may ask। so सठिक आंसर आपणकर होची ऑप्शन नंबर डी, memorize all the answer to the question while teacher may ask। go to next question, question number 26। concept of observational learning was given by option A, Tolman. B, Bandura. C, Thorndike. D, Kohler। so सठिक आंसर आपणकर होची अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। go to next question, question number 27। the statement men are generally more intelligent than women। option A is true. B, may be true. C, shows gender bias. D, is true for different domains of intelligence। so सठिक आंसर इज show gender bias। go to next question। understanding the principle of development of a child helps a teacher in option A, identifying social status of the learner. B, identifying economic background of the learner. C, rationalizing why the learner ought to be taught. D, effectively catering the different learning styles of the learner। so सठिक आंसर इज effectively catering to the different learning styles of the learner। option D is the correct answer। जीवा परवर्ती प्रश्न को क्रिस्टियाना took over her class for a field trip and after coming back she discussed the trip with her students। it may not be connotated as option A, assessment for learning, assessment of learning, assessment for learning, learning for assessment, learning of assessment। so सठिक आंसर इज आपणकर ऑप्शन नंबर ए, assessment of learning। जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 30। the statement an important precondition for proper development of a child ensuring his or her healthy physical development। option A is true as physical development does not affect other domains of development in any way। B, may be incorrect as development varies from individual to individual। C, is true because physical development occupies the topmost place in the sequence of development। D, is true because physical development is interrelated with other domains of development। so सठिक आंसर हो आपणकर is true because it is related to other domains of development। यही थिला आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। जदि आपण आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तले थिबा घंटी आइकन को दबाई प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु तापर रेगुलर अपडेट्स आपण पाई परिबे और आपण एग्जाम क्लियर करिवारे बहुत हेल्पफुल हबो। एति कहि रखुछि आपण का दिन शुभ मंगलमय हेउ। जय जगन्नाथ।